change on marine wildlife. Climate change is undeniably one of the most pressing challenges of our time, with far reaching consequences across the globe. In particular, the delicate ecosystems of our ocean and seas are increasingly threatened by its impacts. This podcast session aims to shed light on the severe consequences of climate change on marine wildlife by exploring its effects on various species. We hope to inspire all of you to take urgent action to tackle this global crisis. The first main point of or effect of climate change on marine wildlife are the rising sea levels. One of the most apparent effects of climate change on matter is the rise in sea levels as a result of melting glaciers and ice caps. Many coastal habitats will be submerged, displacing countless species. Coral reefs, for example, are intricate ecosystems providing shelter to innumerable marine organisms. However, rising sea temperatures lead to coral bleaching, which deprives marine life of their vital habitats and leads to a decline in species diversity. The excessive emission of greenhouse gases, such as carbon dioxide, not only contributes to global warming but also causes ocean acidification. As the ocean absorbs large amount of carbon dioxide, the chemical balance is disturbed, resulting in higher acidity levels. This has detrimental effects on many marine species, especially those with calcium carbonate-based shells or skeletons, such as coral reefs, shellfish, and microscopic plankton. Acidification weakens their protective structures, hinders reproduction, and could ultimately drive these species towards extinction. Climate change disrupts the delicate balance of marine food chains, with severe implications for the entire ecosystem. Rising sea temperatures and changing currents impact the distribution and abundance of marine species, leading to imbalances in predator-prey relationships. For instance, as certain fish populations decline due to changing habitats, predator species that rely on them for sustenance suffer from a diminished food supply, affecting their survival and the overall stability of the ecosystem. The warming of our oceans due to climate change is causing a notable shift in the distribution patterns of marine species. With rising temperatures, some species are migrating towards cooler regions in search of suitable environments and food sources. This movement disrupts established ecological interactions and can lead to conflicts between previously separated species. Moreover, as species adapt to new areas, they may outcompete native species for resources, further threatening biodiversity in affected regions. Climate change poses a grave threat to marine wildlife and the fragile ecosystems they depend on. Rising sea levels, ocean acidification, disrupted food chains, and shifts in distribution patterns are just some of the ways in which climate change impacts these vital habitats. It is incumbent upon us to take immediate and protective measures to combat climate change and minimize its effects on marine wildlife. Through collective action and sustainable practices, we can protect and preserve these unique ecosystems, ensuring the survival and well being of countless species. Let us act decisively for the sake of our oceans and all the vibrant life they harbor. Azan and Phoenix hope to have inspired you all to do the right thing from now on. Thank you. फिनिक्स ने बैठ के पूरी रात तैयार करा था यार. फिनिक्स ने पूरी रात बैठ के तैयार करा था यार. खत्म हो गया. कितना टाइम है? अच्छा हो गई। जी. और मेरा गला खराब था. मेरा गला इतना खराब है, मेरे से नहीं हो रहा था यार इतना. आप लोगों ने तो सुबह से बीमार हूँ मैं. हमें हमें सुबह से कॉम्प्लेक्स बीमार फील बैठा. कर रहे हैं। हम कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं, अब हम क्या बोलेंगे। बाय बाय. प्रेजेंटेशन अच्छी थी, नाइस। या अच्छा था, काफी ज्यादा फिनिक्स हो अच्छा रहा था। मैं. अब अच्छा जाओ नीचे जाओ। अच्छा बोला, काफी अच्छा बोला। मुझे काफी ऐसा लगा कि मैं अपने ग्रेजुएशन डेज में आ गई एंड इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन सुनने मिली। For real.
काफी बचपन से एनर्जेटिकली experience बोला, ये अच्छी बात एंड है। ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट चल रहा था, बहुत अच्छा गुजरा। है। यस, क्लाइमेट के बारे में। ओके नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम बुलाए जाएंगे हमारे प्यारे मिस्टर असद को और उसके पार्टनर को। माइल्स प्लीज आ जाओ पेन। स्टेज। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आवाज आ रही है ना? मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। ओके, अब बोलो। हेलो। हेलो। हाँ, ठीक है। Sorry. ओके। Yeah. So, या लेट मी। us had decided on that we were going to talk about paranormal experiences and events that, you know, we've heard or we have experienced. So, in the beginning, I would like to ask Asad if he believes in such things and if he's a skeptic or not. ऑफ कोर्स आई डू बिलीव होती है ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, Huh. लेकिन You मैंने have to कभी believe. No, encounter but you नहीं have to believe in order to be a Muslim as well, because it's written. किया। आई कैन एग्री ऑन दैट। But you वी शुड haven't. बिलीव। But you haven't experienced anything like this. नॉट रियली। व्हाट अबाउट यू? I've had multiple uh, encounters, and that's the thing. If I begin to speak, I don't know if you're going to be skeptical or not, or if you're not going to believe me, or if you're going to believe me. But let's see at the end, and everyone who's listening as well. I mean, we're gonna understand. mhm. Sure. I'll be honest. It started when I was, when I was little, when I was born. The house that I was in was in a deserted place in the beginning because there was no houses nearby. And when I was younger, I used to hear people running on the roof of my house, which was a thing that we just accepted. We didn't believe it. We didn't want to believe it, but we had to believe it, right? The biggest thing that happened that sort of made me believe in all of these things was something happened that caused an accident with me, my brother, and his friend, and it was something that we can't explain even to this day. So हुआ ये था कि we were going to the market, and there was a dog in the middle of the road, and naturally we were not going at a very high speed, but we sort of drifted it apart. And now the car crashed into a tree. My brother got seriously injured. His friend broke his shoulder plates, and I had a piece of glass stuck in my head. I had to pull it out when I got home because I didn't feel it at the time. But what happened was that when our car crashed, there was a camera over there, conveniently, and we looked at it when there was no dog on the road. And everyone, even my family and his mother, they don't agree, they don't buy it that we saw a dog. They just think that we were over speeding and we lost control of the car. So you guys And just randomly saw a dog on the street? yeah, we just randomly saw a dog on the street, and naturally you just start to, you brake or you just change your lane or something. Yeah. But उस टाइम पे ना गाड़ी का कंट्रोल खत्म हो गया था, and our We- car just crashed in the middle, like it snapped into two pieces. Oh. I luckily didn't get any serious injuries. There was a piece of glass in my head that I had to just pull out when I got home. It was a very riveting experience, I'll tell you. But after that, there were a lot of events that happened that I could not explain, that happened with me personally. When I used to sleep, I had my own room. When I used to sleep, every night I used to feel like someone is running around my bed. Oh. Running around it. Like And really someone is...
Yeah, like he's just bed ke chakkar kaat raha hai, like 24 घंटे whenever I used to lie down. And the thing is, whenever I used to pray Ayatul Kursi, the sound used to just go away. I used to be very scared that I didn't put my head out from the quilt, because I didn't want to see if something was there. But I believed it as well. Mm-hmm. And recently, just now, what happened was that I woke up in the middle of the night and I went down to get some water. I came up and my room was locked. My room was locked. You can lock it from the inside. There was no one in the house. Dang. I had So to what did you do? I didn't do anything. I thought that I was half asleep. Because when you wake up, you're like, you don't really know what's going on, right? Like, you were a bit dizzy and Yeah. So I just thought it's me just being crazy. So what I thought was, okay, I'll go to my brother's room and I'll just sleep there. So I called you him. didn't try to open your room? No, I wanted to get into my room, but it didn't open at the time. It wasn't opening. So I got annoyed because it's something that I'm used to now. Whenever I'm in Yeah. my room, I feel like someone is watching me. And sometimes something just pulls on my shoulder sometimes at night. And I'm used to it. I don't react to it anymore. So what happened was that I tried to call my brother to see if he's awake and if he can open his door, because we all lock our rooms at night. It's a habit. Yeah, it is. So I was in front of my door. I tried calling him, and my room opened. Like it opened. It opens all of a sudden. It opens all of a sudden. Yeah. Like just randomly. Yeah, just randomly. When I was about to call him, the door opened. Oh. And I got so confused that I just started to laugh in the hall. Because nothing like this has happened before. So I opened the room and I'm like, everything is normal, right? And I got so weirded out. I had my water bottle and everything, and I put it on the table in the hall. I was going to take that, and I saw a lizard on the wall. Mm-hmm. Naturally, I don't mind killing lizards. I'm used to it now, right? So I just grabbed the spray and I went to kill it, and the lizard disappeared. It went up and it disappeared. And then I just went to bed and just slept. I didn't want to acknowledge it. I was laughing the entire time. But yeah. Do you have anything, like, have you heard anything from someone that you would like to share, or should I continue with my stories? I don't have any stories, but I think we all would love to hear some more stories from you. Well, I wouldn't mind. So the first thing that ever happened was I was in my old house, right? The house that we used to hear the running from the roof. And one day we were just sitting in one room, right? All of us. And the door just opened and then the TV closed. And then I went out and I saw that the gate was completely open. It was 2 a.m. We locked the gate like every night, naturally you do that. It was fully open at 2 a.m. That's scary. Exactly. And you don't really think of it like it's something else. You just think it's, there's someone that broke into the house. Yeah, probably. Yeah, so what I did was that me and my brother, he went to lock the gate. I just standed guard. I had firearms with me at the time. So I just fired a few shots in the air, and then I was like, if anything's gonna come, they're gonna get it. Off topic, I had a home invasion once, and I actually shot a person in his leg. And that was an experience. I haven't experienced anything like that too. It was an adrenaline shock. Yeah, I can tell. So the gate was open, and it's 2 a.m, and I'm losing my mind.
and he went to lock the gate, and I see that there's a, I don't know if this sounds very cliche or cheesy or whatever it is, but there was a red balloon there, which I never could understand. It was 2 a.m. Why would there be a red balloon inside my house? We had no kids. There was no one who had bought balloons. And it was just a weird experience altogether. And we had guests over at that time. I had my cousins with me, and they experienced it as well. Oh, Even in this house, I feel like there's something attached to me, or there's something following me whenever I go. Because, so you still feel like something is around you? yeah, I feel like something is around me, because at night, if I'm, on the computer, I have my back to my room, right? And I feel like someone's watching me, or like holding my shoulder and pulling me back. Yesterday, I was playing VR, and I could hear something just moving, and I didn't want to check, because I was just like, it's okay, I'm used to it at this point. Oh, But I mean, but the but stories. I'm sure you're gonna experience something too, because when you talk about these things, they attract, and you're hearing it. Ye- I think so. It will. I mean, it's hard to believe, but it I mean, it it is hard surely to will at believe. some point. But Yeah, when it happens the first or second time around, you have to believe it. If you don't, then you're just a non-believer at that point. yeah, I can. Okay, so thank you guys. Thank you for the I hope opportunity. you guys are. And Yeah. It was a really nice one. I actually enjoyed this one. My favorite I topic था. personally okay, bye. hate horror stories because मुझे सबसे ज़्यादा लगती है चीज़ों से। फिर भी मैंने लाइक सुन लिया बिकॉज़ वो सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, दिखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। खैर नेक्स्ट तो हम दोनों ही हैं। तू स्टार्ट करेगी कि मैं करूँ? Depends. डिपेंड्स क्या? तुझे देना था इंट्रो या मैं दे देती हूँ? Okay. दे दो उनको। Okay, so apparently guys हमारा टॉपिक है about a game जो कि बहुत पुराना गेम है, एंड लाइक जब कोई 2010 में आई थिंक मैं कोई 10 साल की होंगी तब खेलना स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो इट्स एक्चुअली अ 2D एनिमेशन गेम जो कि एक वर्चुअल रियलिटी टाइप का बना हुआ था। उसमें लाइक वर्चुअल रियलिटी के तो बहुत सारे गेम्स होते हैं, लेकिन वो काफ़ी इजी उसका इंटरफेस था एंड इट वाज वेरी इजी टू प्ले। तो काफ़ी सारे लोग उसमें अट्रैक्ट होते थे, एंड लाइक इंटरनेशनल लोग, लाइक हर कंट्री के लोग आपको उसमें मिलते थे। हाँ, तो बेसिकली ये गेम्स जैसे कि कैटी ने कहा है कि वर्ल्ड वाइड बहुत जगह से लोग आते हैं ये गेम्स खेलने, मतलब तब ये गेम बहुत डिमांड में थी। एंड मैं और कैटी यही गेम से मिले, मतलब हम दोनों 2010 में मिले एंड अब तक देख सकते हो लाइक हमें 12 साल हो गए साथ रह के। तो ये गेम हम दोनों के लाइक दिल के बहुत करीब है बिकॉज ये गेम से ही हमारी दोस्ती शुरू हुई थी और अब ये गेम अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुकी है। सो बेसिकली ये गेम कैसी होती थी लाइक इसमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स होते हैं, या इसे रूम्स कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं यार इसे, प्लेसेस कह सकते हैं। प्लेसेस होते थे डिफरेंट काइंड्स। हाँ, जिसमें आप हैंग आउट कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ। तो बेसिकली मेरा कोई इंडियन फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे, उनके साथ ही मेरे ग्रुप्स होते थे। तो मैं इन लोगों के साथ ही होती थी एंड हमारे जो बाकी ओनर्स है, जिस एक मुस्की है एंड दूसरी ट्रिब है। तो ट्रिब एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसने सबको पागल बनाया लड़का बन के। जो बात है उसके इशारे, मतलब उसकी एक टारगेट तो मैं भी थी, उसने सबको पागल बनाया। वो लड़का बनकर ही घूमती थी, किसी को उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी। दूसरी मुस्की तो एक लाइक स्वीट लिटिल गर्ल, उसकी भी लाइक अब तो शादी वादी हो गई, खैर ऑफ टॉपिक हो गया।
मेरे तो ज़्यादातर मेरे काफ़ी सारे इंडियन फ्रेंड्स थे उस वक्त, लाइक जब मैंने खेलना शुरू किया था मुझे इतने सारे इंडियन लोग, पहले कोई वो प्राची एंड समीर वगैरह से दोस्ती हो गई थी, देन पलक गैंग मिली थी हमें, एक पलक गैंग हुआ करती थी, एंड नॉट गोना लाई गाइस उस गेम में फड्डे जितने होते थे, ओ माय गॉड, लाइक सब लोग अपना अपना गैंग बना के खड़े हो जाते थे एंड फड्डा करने लगते थे। लाइक उस वक्त एक टाइम पे हम लोग इस चीज़ का बिलीव ही नहीं करते थे, लाइक वो इन रियल लाइफ नहीं है, हम लोग वो जस्ट गेम में, लाइक जब फड्डे शुरू होते थे ना तो इतने कोई एक्सट्रीम हो जाते थे ना वो, कि बस क्या ही बताएं, एंड मुझे बहुत मज़ा आता था। मुझे वो खड्डों में लिटरली अपने भाइयों को बुलाना पड़ता था कि लाइक जो मुझसे बड़े थे मैं उनको बुलाती थी कि लाइक, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ लड़ाई जल्दी, तब की एज में तो बिल्कुल नहीं कर पाती थी, तो मैं उनको ऐसे सामने खड़ा कर देती कि लाइक लड़ो लड़ो इनसे लड़ो। तो बेसिकली ज्यादातर फाइट्स है ना इंडियन पाकिस्तान के बीच में ही होता था, ये तब तब से ये वॉर चालू है यहाँ पे कि लाइक या तो ये इसकी बुराई करेगा या तो ये इसकी बुराई करेगा। जो और बात है, और सिर्फ यही हमें नहीं, एक्स्ट्रा टॉपिक से भी फद्दे होते थे, कभी कभार अंग्रेज भी आ जाते थे, अंग्रेज़ों को तो बहुत ही मसले होते थे, पता नहीं किस किस बात से उन लोग को मसले हो जाते थे, एंड देन वो एक अलग फद्दा शुरू हो जाता था। हाँ, और ये या क्या कह सकते हैं गेम के बारे में। और या इस यार ये गेम के बारे में दूसरी बात यह है क्या है कि पूरा चाइल्डहुड गुजरा है इस गेम में, तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग, लाइक एट दिस पॉइंट पे मेरे सबसे ज़्यादा जो दोस्त हैं और इतने सालों पुराने दोस्त हैं ना, वो मुझे इसी गेम से मिले हैं, इंक्लूडिंग मुस्की हो गई, ट्रिप हो गई, लाइक आई थिंक राल्स भी नहीं बना होता अगर ये मैं गेम नहीं ना हूँ। होता। तू तो है ही ना एक्स्ट्रा, ठीक है, तेरे अलावा एक्स्ट्रा जो है मुस्की हो गई, ट्रिप हो गए, and यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, साद हो गया, उमैर हो गया, तो आई थिंक उन लोगों से इतने साल पुरानी दोस्ती वो अभी तक है, एंड आई थिंक राल्स भी आरवर्ल्ड की वजह से ही बना है, आई थिंक राल्स कभी नहीं हाँ, बनता अगर आरवर्ल्ड नहीं होता तो। अगर आरवर्ड बननी होता तो फॉर श्योर आज कभी नहीं बनता, हाँ बिकॉज वो एक जरिया थी जो हम सारे कनेक्ट होते थे वहाँ पे, नहीं तो हम कभी डिस्कॉर्ड आते ही नहीं थे फॉर श्योर। हमने कभी ऐसे कोई आइडिया भी नहीं था कि लाइक हम डिस्कॉर्ड सर्वर बनाएंगे। डिस्कॉर्ड से हमें इंट्रोड्यूस ही साद ने कराया था। हाँ, हम डिस्कॉर्ड पे थे हम, बट वो जो सर्वर पे हम एडेड थे हम वहाँ पे उसका हम लोग नाम ने भी आरवर्ल्ड की आवाम था, उसका नाम भी आरवर्ल्ड की आवाम था, एंड देन वो डिलीट हो गया था। हाँ, मतलब जहाँ पे मैं और कैटी जाएंगे वहाँ पे सब हम लड़ाई करके ही आते हैं, तो ये एक ही सर्वर है जिसमें हमने ऐसे टिका के रखा है चीजों को। एंड आरवर्ल्ड और की बहुत अच्छी बात थी, लाइक उसमें अलग अलग आइटम्स आते थे, हर महीने आइटम्स आते थे, एंड देन यू कैन ऑल्सो ट्रेड, ना लोग सारा सारा दिन बैठ के वहाँ पे ट्रेडिंग हाँ, करते थे। जैसे जैसे आप गेम्स में गन्स की स्किन एक्सचेंज कर देते ना, वैसे ये जो इधर की जो इसमें जो जो आइटम्स होते थे ना वो रियल पैसे पे हम बेचते थे। फॉर एग्जांपल जो मेरे भाई थे उन्होंने अपने आइटम्स इंडिया के करेंसी में 89,000 पे बेची थी, मतलब लोग इतने खरीदते थे वो टाइम पे। तो जब मेरे पास आई थी तो मैं तो बेचने के लिए रेडी नहीं थी, बिकॉज वो एक ही चीज थी जिससे मैं अमीर लगती थी। और जब ये कैटी के पास आई थी तब वो सबके लिए लाइक अवेलेबल हो गई थी, तो वो एक रेयर वाली सीन हटी गई थी, तो बेचकर कोई फायदा नहीं था उस चीज को। टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ ये मसला था कि जो आइटम सब पे अच्छे लगते थे वो मुझ पे अच्छे नहीं लगते थे। आई डोंट नो मेरे साथ ये क्या मसला था, लाइक डीमन आइज या अनु लगाती थी इतनी अच्छी लगती थी, मैं डीमन आइज लगाती थी मैं इतनी कोई बुरी लगती थी, तो मैं हर टाइम अपनी वो नस्वार वाली लाल आंखें लगा के रखती थी। देन उसके बाद मुझे फीन्स मिल गई थी जो मैं शादी ने दी थी, तो उसकी उन पर मैं अच्छी लगती थी, एंड देन मैं बबल गम लगा के फेंकती थी सारा वक्त, उस पर मुझे इतना सुनने को मिलती थी कि बबल गम पहनी रहती है हर वक्त, एंड मैं जूते भी नहीं पहनती थी, मुझ पर जूते भी नहीं अच्छे लगते थे, मैं नंगे पाँव पहनती थी, एंड वाज रियली फन यार। यार ये गेम अगर होती तो मैं शायद डिस्कॉर्ड पे बहुत कम होती ऑनलाइन जितनी जो यहाँ पे बात है, मैं- we were really sad when this हम game got दोनों shut down. हम दोनों इतने लाइक डिस्परेट है कि लाइक हम जो वो गेम के लाइक जो टीम है ना, लाइक उनकी ईमेल आईडी ढूंढ रहे कि लाइक मिल जाए उनको, मेल पे स्पैम करे कि लाइक प्लीज ये गेम कैसे करके स्टार्ट करवा दो करके। लाइक वो रहता है कि लाइक एक चाहिए कि लाइक वापस आ जाए वो सारी चीजें जो हम थे, फ्रेंड्स थे, सब थे। For real यार बहुत याद आता है, like literally हम लोग 24 घंटे वहीं पे बैठे रहते थे, इवन कोई साइड में काम भी कर रहे होंगे तब भी आरवर्ल्ड खुला हुआ होगा, एंड इट वाज लाइक सो इजी, लाइक आप जाके एक जगह बोर्ड वॉक पे खड़े हो जाओ, जैसे आपके फ्रेंड्स ऑनलाइन आएंगे वो आपके साथ आ जाएंगे, एंड लाइक इट वाज अ रियली नाइस मेमोरी। लाइक मैं जब भी उस गेम को याद करती हूँ आई ऑलवेज स्माइल।
हाँ, मतलब हम वो गेम खेलते-खेलते ही बड़े हुए ऐसे कह सकते हैं। मतलब स्कूल के साथ एक कोई गेम जुड़ी होती थी। तब तो लाइक वाई-फाई वाली सीन भी नहीं थी बेचारी, मैं ब्रॉडबैंड में खेलती थी, केबल केबल वाले नेट से रहती थी। फिर मेरे पापा काट देते थे केबल बिकॉज़ मैं ज़्यादा ही एडिक्ट होती थी वो गेम से। बट फिर भी उस गेम ने लाइक हमें साथ रखा जो सबसे बड़ी बात है एंड सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारा। जो बात है, चलो खैर एट दी एंड यही कहना चाहूँगी कि हमारा पूरा चाइल्डहुड जुड़ा हुआ है उस गेम से एंड वी विल ऑलवेज रिमेंबर इट एंड वी विल ऑलवेज मिस इट। या सो एट दी लाइक एंड वापस आ जाओ, दुआ करो कि वापस आ जाए गेम। Hashtag that game. क्या बोल रही डैड गेम बोल के चला गया। यार, दफा हो जाओ यार। हाँ जी, थैंक्स यार, टू आरवल मैं फॉर ऑल द रिक्वेस्ट मेमोरीज। करती हूँ मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जाके आरवल के चैनल में वापस आ जाओ, लिख दो डेड के अलावा यस प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ That game, that game. यार। मुझे तो मिल भी नहीं रहा, चैनल कहाँ गया, किसी ने डिलीट तो नहीं कर दिया? अच्छा मिल गया। खैर हाँ शिमा पे तो डैड गेम स्पैम कर रहा है। जाओ यार, तुम लोग को दुआ नहीं मिलेगी अच्छी। लिंगो इस पर बात नहीं करता। ओके चलो तो फिर एंड करते हैं साथ में। हम अपना इवेंट थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, बी राइट बैक पे जाके इतनी देर में हम वोटिंग कराएंगे एंड देन हम आके विनर अनाउंस करते हैं। हाँ जी। ओके सो पुटिंग स्ट्रीम ऑन बी आर। कर दी। अब मुझे क्या समझेगा। हाँ हाँ कर दी, बी राइट बैक पे उसे आ स्टाफ चैट। अ,
Okay. Okay, guys, so the voting has ended. And Anu, would you like to announce our winner? यार ये तो किसी ने सर्वर म्यूट दे दिया था। Guys, मैं जीत गया। हाँ जी, श्रेक जीत गया। सरप्राइज। तो ये कांग्रेस हाशिम और कारी। कारी को तो बुलाओ। Congratulations यार, विनर्स ऊपर आ जीते हो। जीते हो। एवरीवन पिंग जिसने किया था उसको तो नाइट्रो नहीं मिलेगा, कारी को दे देंगे। हाँ हाँ यार कारी पे नाइट्रो है क्या ऑलरेडी? नहीं नहीं नहीं, दोनों पे नहीं है। पैसा बचाने के चक्कर में लगे हैं भाई। बूस्ट हमें आएंगे, 4 बूस्ट हमें आ जाएंगे। 17 ऑलरेडी है ना, बस ये है। बस 4 बूस्ट आने चाहिए, हमें ना नाइट्रो कैंसिल। जब ना हो तब किया करो इवेंट्स, बस ना हो। जो बात है, ऐसे इवेंट्स कराया करो, मजा आता है यार। इंशाल्लाह यार और भी हैं इवेंट्स लिस्ट में, वो भी सून। हाँ आ जाना करना यार, मेरी हिंदी कितनी गंदी हो रही है। छी, 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 छी। ओके, तो हम अपने विनर्स से उनकी स्पीच सुनना चाहेंगे। विनिंग मुझे मत भेजना नीचे भाई। ओके यार, श्रेक ऊपर ही रहो यार तुम। कारी कहाँ गया यार? कारी को मैंने बुलाया है, वो आ ही नहीं रहा। ओ कारी साहब आइए, स्पीच दीजिए। अच्छा ये म्यूट है, ओ माय गॉड। यार ये सर्वर हाय हाशिम, मैं ही कर रही हूँ, मैं ही की थी हाशिम को, तो मैं ही की थी। लाइक मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ अपने ध्यान में, इसको पता नहीं क्या मसला है ना। नो क्या मसला इसको भाई अपनी दोस्त को समझाओ यार, कुछ समझो यार। नहीं चलो स्पीच भाई कारी को बुलाओ यार। मैंने तो मैं नीचे तुम जाओ। तो देख लो, बात करो। ओके, अब बोलो आशिफ भाई जो बोल रहा है। नहीं यार, मैं अकेला नहीं बोल सकता, मुझे जिस बंदे ने कैरी किया, हमारा मेन जो बंदा था, उसके बगैर मैं कैसे कर सकता। अच्छा, मैं अपनी तरफ से स्ट्रीम एंड कर रही हूँ, कॉज सून अभी टूर्नामेंट है हमारा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड अल्लाह हाफिज। और इजी पैसा पे ढूंढो एंड थैंक यू फॉर द वर्ड्स। यार इजी पैसा मेरा लगा दो। ओके अभी